Good morning to all of you. To begin with, I will start using this icon. Are you able to see this icon? This is ISE Design Suite 14.7. I will prefer. Just double click on it. It will open and we will start the project and then we will start designing the systems. I'm planning to implement the circuit diagram. Yeah, this circuit diagram, that is multiplexer. This circuit diagram using structural modeling. In this session, I will use both approaches. One is the top-down approach and other is the bottom-up approach. First, I will start with the one of the approach, which is nothing but bottom-up approach. Is it right? Now here, how to start, how to begin. If anyone has any difficulties, you can raise your hand and you can discuss with me. I will able to do everything to you. Is it right? Now, I'm starting with, yes, I'm starting with implementation of this particular circuit diagram. First, I will use the bottom-up approach. Means I will prepare first the NOT gate, then I will prepare the 3-input AND gate, then I will prepare this OR gate, and then I will combine together. It will form the total system. That is bottom-up approach. And the same example I will implement by using the reverse methodology, that is a top-down approach. Is it right? Now I will start this implementation by using bottom-up. First, I will create the file. Just give me a minute. Okay. Here I will go to the file menu. I will start the new project. Some name should be given to the project. I'm starting with this, the new project, and I'm giving some name to this my project. And I'm giving name to the project is TY BTech underscore BTech. TY BTech is the name of my project, and under this particular project, I will do everything related to this. Just I will come back to you. Just give me a minute. Now here, then click on the next this device, Spartan 3E or whatever we wish. We can change this list device later on. I will not discuss about this selection of the device right now. I will click on the next and finish. Now when I will click on the finish, look at here, look at this place. Just I will use the cursor somewhere. If you are not able to understand, just raise your hand. I will be in a position to explain these steps once again. Look at this part. I have created the module or project TYBTech here. And in that case, this device was selected. This is the FPGA device. XC3S500E FG320. This is the device. This device can be changed later on by using some of the commands are there or simple techniques are there. We can change this value. Now, click on this device, not on the project. This is your project. Click on the device. And after clicking on the device, right click here and then select new source. Right click and new source. Then here in this case, we will select the VHDL module here, this option, VHDL module, and give some name to that module. I'm planning what I'm planning. I'm planning to design this particular circuit diagram using the approach. That approach is nothing but the bottom-up approach. Means what I will do, I will implement first AND gate, then OR gate, then NOT gate, and then I will combine these two together to form a complete system. Are you getting me? Now in this case, I will implement first this NOT gate. Is it right? This NOT gate. The NOT gate has one input and one output. In that sense, otherwise I will use another file here. That is A4. Look at here. How is my plan? I'm discussing parallelly. First, I'm planning to implement the NOT gate. How is the NOT gate? This is the NOT gate. It has one input. I will call it as I1. It has one output, that is O1. I will implement this first. We will check its performance and then we will implement another gate. And I'm planning to implement this circuit diagram. We are planning to implement this circuit diagram, and first we have started with this NOT gate because we are using the bottom-up approach. We can use the top-down approach also.
In this case, if I'm giving the name to that module and underscore, sorry, not gate, not underscore gate. I'm giving the name to this module. First, I'm planning to implement this not gate. Not gate को implement करना है. मैं उसका नाम दे रहा हूँ not underscore gate. The next, I have to give the inputs. The name of the input to this gate, I have given it as I1 and output will be O1. Those values I have to enter here. This is I1 is the input and here I will name it as O1 is the output. I will make it as out and then next and finish. Otherwise this can be changed later on also. इसको हम बाद में भी बदल सकते हैं. The next and finish. When I will complete the next and finish, this NOT gate module, look at here, look at this part, The NOT gate behavioral module is created. I will write here the VHDL code. This double dash is the comment. All these are the comments. For the sake of simplicity, I will delete all these comments. I'm deleting the comments, nothing else. I will delete these comments also. These are the comments created by the system automatically. And just this is dash. Miss here, these are the hyphens. Is it right? Means I'm able to separate the things. This is library declaration part. I'm using this hyphen command or comment command to separate between the modules. ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ. First part, this part is the library declaration. This part is the entity declaration. This will be created directly by the system. I'm not doing anything for this. ये अपने आप create हो जाता है. उसके बाद मुझे NOT gate के लिए प्रोग्राम लिखना है. Even though I have written here as a behavioral, but I can write the code for data flow because which is the simple. Is it right? Because which is simple. Otherwise, I can write the behavioral code also by using the technique if and those kind of the things. But I will prefer here. This O1 is assigned as not I1. Is it right? I have saved the design. And then semicolon. Is it right? Not I1. This complement of the I1 is our output. Now what I will do, this window is the main window. This is the execution window. And this is the command window. Yes. Sir, Anyone? the font is very small. Font is very small. Just I will modify my font size. I will increase it. Just give me a minute. Just give me a minute. I will. Now, are you able to see the font size? Sir. Thank you, sir. It's visible. Yeah. Sometimes I need to come out of this maximize the font size also because it is not the function of the software. This is another function I'm using in this particular case. Now, this is the library declaration part which I have completed. Then this is the entity declaration part which we have completed here. Then architecture followed by the name of the architecture of name of the entity is. Then begin. Here O1 is not I1 and end behavior. This is the code I have written. This is the code for NOT gate. Is it right? Now, when I will come to this side, I will come on this side. Look at this part. Here is option user constraint synthesize XST. I will click on this option synthesize XST. Just double click on it. It will synthesize it and it will give the result for you. Now here in this case, when I am synthesizing it, it will give the result of synthesis only for. It will give the. I will come back whenever I am typing. I will zoom it again. Just here, it will synthesize for the syntax error. And look at here, this part. If you are able to look at this part, this is synthesize XST tick. Here is a tick. Means we have synthesized. You can see it's RTL schematic. You see this technology schematic. We can check the syntax error. We can generate the post synthesis stimulus and so many things. Now, first I will try to see the RTL schematics, how my gate look like. Here, this is NOT gate I1 and O1,
and this is internal architecture. Here, look at this is I1 and this is O1. This is I and O, and this O is the complement of the input that we are able to see here. Is it right? Just I will close this window. Now I have synthesized it, but I don't know whether the circuit is functioning properly or not. For that, I need to go to this option. Look at here. The two options are available at the top. One is the implementation and another is the simulation. Right now we are doing on the implementation. We are working on the implementation. Now I will click on the simulation. Look at here, this NOT gate is available. So what I will do, I will create a test bench and I will apply the stimulus. I will apply the input and we will see for the correctness of this NOT gate. For this, what I need to do, click on this module, right click on new source. Right click and click on new source. After that, go to the module VHDL test bench, this option, VHDL test bench, and give the name to the test file. I'm giving the name to the test file as test underscore not underscore gate. You can give any name, but not gate I am testing. That's why I'm giving the name as test underscore not underscore gate, and I will click on the next and finish. Is it right? When I'm doing this, I'm just coming out of the Zoom. Now look at here. Another file is created. If I'm able to show here, look at this part. Look at this part. If I'm clicking on this plus, this is my original file, which I'm double clicking on this. This is my AND gate. If I'm double clicking on this, this is the test file which is created by the system. Again, for the simplicity, what I will do, I will delete the comments. I'm deleting the comments. This test file is also created by the system automatically. Is it right? Created by the system automatically. Now here in the test system, we have the two things. Whether we want to test for sequential circuit or we want to test for the combination circuit. Just I will come out of the Zoom and then I will discuss. Is it right? There are the two things, whether we want to test the sequential circuit or combination circuit. Sequential circuit means circuit having the clock statement. Now our is the NOT gate. NOT gate does not require any clock. Is it right? So I'm testing the combinational circuit, and while testing the combinational circuit, I have to do little modifications, little corrections in the test file which has been generated. ये टेस्ट फाइल जनरेट हुआ, इसमें मुझे कुछ चेंजेस निकालने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे. अगर sequential circuit, because this version of the software is suitable for the clock system design. But if my system is the combination system, then I need to delete some statements. These are the clock statement, and I need to delete the clock statement when I'm using this test file for testing of the combination circuit. Combination circuit को अगर मुझे टेस्ट करना है तो ये clock वाले statements मुझे delete करने होंगे. एक statement है, यहाँ पे 3 statements होते हैं. This is one statement which is I'm deleting. Just I have deleted that statement. I will come down. If I'm coming down, look at here. This is again one clock process. Is it right? I'm deleting this clock process also. And finally, here is another clock statement. Wait for 100 nanosecond. This is clock statement. This is another clock statement I'm deleting. If I'm deleting these 3 clock statements, and I will save it. Control S, I will save it. And look at the option here. Insert stimulus here. Here we are applying the inputs. Here we are applying the inputs and we are able to see the outputs. Now I will write here, what is my input? This is my AND gate. What are the inputs? I1 is the input and O1 is the output. Means I need to change the input, I1. Now here I am writing here, I1 is assigned as single quote, 0 initially, semicolon, and I will use the statement here, wait for 100 nanosecond.
we have to use the wait statement. If we are using the process यहाँ पे process हम use कर रहे हैं. Process should have the wait statement and or maybe the sensitivity list. If here I am not using the sensitivity list, I am using the wait statement. Means this zero input will be available for 100 nanosecond. Then after that 100 nanosecond, I will do some changes. I1 is assigned as 1 single quote and semicolon. Again, I will copy this statement, wait for 100 nanosecond. Just I am copying this, I am pasting here. Just I am inserting the stimulus. तो I1 इनके दो ही possible combinations है. एक तो I1 होगा 0 या तो I1 होगा 1. We have inserted both the inputs. I will discuss once again and then I will come back to you. I am starting from the first. First, click on the option simulation, this option. Then right click on this module and select create the test bench file. After creating the test bench file, this file is created by the system automatically. After having this system, delete the 3 clock statements available in this particular program. After deleting, go to the situation or go to the position where the comment is written insert stimulus here. And we are inserting the stimulus is nothing but input I1 is equal to 0 for 100 nanosecond and I1 is equal to 1 for 100 nanosecond, and we are testing this input. Then click your cursor on here. यहाँ पे आपका cursor होना चाहिए, यहाँ पे नहीं. यहाँ पे होगा तो आपका आउटपुट गलत आएगा. पहले इसको दिखाता हूं मैं आगे. If we are putting the cursor on our device, not on the test file, cursor आपका होना चाहिए test file पे. अगर हमारा कर्सर है नॉट गेट पे और यहाँ पे नीचे आते हैं और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं simulate behavioral model, my cursor should be on the test file, but deliberately I am putting my cursor on this module which is I have created, and just I am creating stimulus behavioral model. I am running that behavioral model. It will generate the waveform file, and through that waveform we can understand what is to be taken and what is not to be taken. Allow access. Yeah, this is the waveform. Yes, this is the waveform. Now look at what is this waveform indicates. U means uninitialized. We have not given any input to the system. इसलिए आपका जो cursor होना चाहिए वो test file पे होना चाहिए, not on the file design module. I will go back again. I will close this file. Yes, I will exit application. My cursor should not be here. My cursor should be on the test file. अगर मेरा cursor module पे रहेगा तो output नहीं आएगा. Output आएगा uninitialized, because system is not able to know that which inputs you have applied. यहाँ पे double click करेंगे तो आपको module दिखेगा. यहाँ पे double click करेंगे आपको तो ये आपको ये दिखाई देगा. या तो आप यहाँ से देख सकते हैं. This is your main program which is of the NOT gate, and this is your test file. Is it right? This is test file. And in the test file, we have given the stimulus. Now I am putting my cursor on the test file and I am clicking on this simulate behavioral model, and you are able to see the outputs. Your cursor must be on this test file. Today we will test many programs. बहुत सारे programs को हम test करें. यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है. First I will minimize it. थोड़ा सा इसको minimize करता हूं मैं इससे, इस बटन से. यहाँ पे एक बटन है minimize. इससे हमें पता चलेगा कि हमारा waveform कैसे आ रहा है. Now look at this part. Just I will maximize little bit and I will show it to you. Look at here. For initial duration, just मैं इसको थोड़ा minimize या maximize करता हूँ. Now look at when input is 0 here, I1 is 0, output is 1. And for this portion, my input is 1, then output will be 0, and this is continued again and again. Means 0 input पे 1 output मिल रहा है. Look at this part. Look at this part. Input is 0, output is 1. Look at this part. This is 0, this is 1. For this part, input is 1, output will be 0 in this way. Otherwise, I can zoom it now for you. Look at this part. Input is 0, output is 1 for this particular part. If I'm going to this part, look at this part. In this part, input is 1, then output is 0. In this way, we can say it's waveform. This is the output. Till now we have designed only one gate, and that gate is the NOT gate. हमने NOT gate को डिजाइन किया, उसका syntax error चेक किया, उसका हमने logical error भी चेक किया. If the output is correct,
मींस लॉजिकली आवर सिस्टम इज प्रॉपर। तो हम हमारा पहला सर्किट हमने डिजाइन किया। आई विल कम बैक टू द डिजाइन। सिर्फ हमने अभी तक नॉट गेट क्रिएट किया है। व्हाट इज आवर एम? आवर एम इज टू इंप्लीमेंट दिस सिस्टम। नॉट गेट हमने डिजाइन किया है, उसके बाद हम डिजाइन करते हैं 3 इनपुट एंड गेट को। Is it right? And then I will go for 4 input OR gate implementation, and then we will combine all together to form a system, and that is nothing but that approach is known as a bottom up approach. Bottom up approach means हम पहले small module से शुरुआत करते हैं। हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम इस कंप्लीट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज नथिंग बट आवर कंप्लीट सिस्टम। आर यू गेटिंग मी? नाउ आई विल कम बैक टू यू। I will come back to you. Now, my aim is to implement. Now, look at here. What is our aim? My aim is to implement this gate. अभी हम इस गेट को implement करते हैं. Look at here carefully. If you have any difficulty, raise your hand. I can answer your questions. Now, here I am implementing 3 input AND gate. इसको मुझे implement करना. This is I2. This is I3. This is I4. Is it right? And this is O2. हम इसको implement करते हैं. Is it right? Means I2, I3, I4, these are the 3 inputs and O2 is output. We are planning to implement this AND gate, that is 3 input AND gate. Now I will come back. I will close this waveform file. Yes, I will exit out of this file. And again, I will come back to the implementation part. Again, I will come back to the implementation part. I will click on this device. इस device के ऊपर click करते हैं. And we will right click on this portion. I will use the new source. यहाँ पे मैं new source use करता हूँ. And I will give the name here and underscore 3 underscore in. यानी कि 3 input AND gate हम design करें. I am giving the name as and underscore 3 underscore in is the name which I am giving to this module, which is the VHDL module. Is it right? This is VHDL module. This VHDL module we are trying to implement, and I am giving the name as and underscore 3 underscore in. I am clicking on the next. I will give the inputs. What are the inputs we have planned? We have planned the inputs as I2, I3, I4. I will give the name in the similar way. I2, comma, I3, comma, I4. These are the names I am giving. We can change these names later on also. This is O2 is the output file we are giving here. Out. Make it as out. The next, then finish. Otherwise यहाँ पे create हो जाता है. यहाँ पे भी आप नाम बदल सकते हैं. Entity and 3 in I1, I2, I3. यहाँ पे भी नाम आप change कर सकते हैं. जैसे मैंने उस केस में अगर हमें ध्यान में नहीं आता है तो आप यहाँ पे भी change कर सकते हैं. I am deleting these comments. इस comment से comments को मैं delete कर रहा हूँ. Nothing else. As well as I am deleting these comments. I am deleting these comments. इस comments को मैं delete कर रहा हूँ. Here again I am trying to write the behavioral model. The data flow model, even though I'm keeping it as a behavioral. Is it right? How is my Boolean expression for 3 input AND gate? 3 input AND gate के लिए मेरा Boolean expression कैसे होना चाहिए? This O2 is assigned as I3 and I4. इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, फिर and I4. Something like this. It should be my Boolean expression. Is it right? And I'm using this directly to implement in the system. We can have this code may be behavioral, maybe data flow, or maybe anything as per your choice. I'm writing the code here as O2 is assigned as. This O2 is assigned as. I'm writing start bracket. This is I2 and I3 close bracket, and this is I4 and semicolon. Is this complete? This portion is ended with thus. And then I'm checking for the correctness. I'm checking for the correctness. Is it right? Just I will keep on this module. Now इस module 3 input and gate पे module पे मैं cursor रखता हूँ और इसको check syntax करता हूँ. I'm using check syntax. This is check syntax. There is no syntax error. Otherwise, if I want to see its internal architecture, अगर इसका internal architecture देखना है तो अभी सिस्टम में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो यहाँ पे 3 डॉट दिखते हैं जो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये वाला पोर्शन.
तो ये होता है टॉप मॉडल। अभी हमने टॉप मॉडल हम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं इसको अगर मॉडल को चेंज कर सकता हूं तो इसका इंटरनल आर्किटेक्चर देख सकता हूं मैं। सेट एज टॉप मॉडल, टॉप मॉडल को अभी भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वार्निंग आएगा, क्लिक ऑन यस, कंटिन्यू। उसके बाद ये हमारा टॉप मॉडल हो जाएगा। और जब भी ये टॉप मॉडल हो जाता है इसको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसका आरटीएल स्कीमेटिक देख सकते हैं, अदरवाइज हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते। हियर आई एम क्लिकिंग ऑन सिंथेसाइज एंड आई एम ट्राइंग टू शो यू द आरटीएल स्कीमेटिक। मैं आपको आरटीएल स्कीमेटिक दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे हम सिंथेसाइज करते हैं, इसका आरटीएल स्कीमेटिक देखते हैं और उसके बाद इसको फिर से सिमुलेट करते हैं, यानी कि इसको इनपुट अप्लाई करके इसका आउटपुट देखते हैं। If I'm clicking on this part, view RTL schematic, I'm double clicking on it. Okay. And this is my I1, I2, I3, and this is O2. How is this system? This system is I have I4 input, I3 input, I2 input. These are the three input. This is my AND gate, and this is my the output terminal of that particular AND gate. Means indirectly we have implemented three input AND gate. This is RTL schematic. I will close it. मैं इसको close कर। अभी हमने ये पता चला इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद कि हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है, वट एवर द सिस्टम वी हैव डिजाइन, दैट सिस्टम डोंट हैव एनी सिंटैक्स एरर। अदरवाइज मैं एक एरर निकाल के दिखाता हूं। यहाँ पे सपोज मैं इस सेमीकोलन को नहीं लिखता, आई एम ट्राइंग टू शो समवेयर हियर। यहाँ पे ये सेमीकोलन, इसको अगर मैं नहीं करता सेमीकोलन का, जस्ट आई एम गोइंग बैक स्पेस, मैं यहाँ पे बैक स्पेस यूज करता हूँ और ये इसको निकालता हूँ, मैं सेव करता हूँ, आई विल सेव इट and then I will synthesize it. Now look at how it will give the error, and that error is a syntax error. Now look at it will give the error. I will go to this part. Look at this part. I'm going to this part which is the error. इस पार्ट को मैं जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा जूम करता हूं, यहाँ पे एरर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और इस लाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। किस लाइन पे एरर है? The parse error unexpected end. लाइन नंबर 16, look at this, लाइन नंबर 16 अनएक्सपेक्टेड एंड आ रहा है। इसका कहने का मतलब इस एंड से पहले कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए सेमीकोलन। अगर मैं इसको करता हूं, देन अगर इसको मैं सेव करता हूं फिर से, एंड अगर फिर से इसको मैं सिंथेसाइज करता हूं तो इट विल गिव नो सिंटैक्स एरर। Means here when we are synthesizing it or we are checking for syntax, it will show only the syntax error, not the logical error. If I'm interested in the logical error, I have to it. यहाँ पे ये टिक हो गया, means there is no syntax error. Is it right? If there is no syntax error, यहाँ पे अगर कोई syntax error नहीं है, then I will go for this part. Now look at again. यहाँ पे implementation में थे हम, मैं सिमुलेशन में लेके जाता हूँ। Look at this. सिमुलेशन में ये सिमुलेशन ऑलरेडी यहाँ पे है जो नॉट गेट का हमने टेस्ट किया था, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ एज इट, ये हमने ऑलरेडी किया है, हमें इसका सिमुलेशन करना है। इज इट राइट? जितने भी आप फाइल का सिमुलेशन करते हैं, जितने भी वेवफॉर्म्स आप जनरेट करते हैं, वो एक जगह पे रख सकते हैं, हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग, कंप्लीट सिस्टम के लिए एक साथ। दैट चॉइस इज योर्स। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू टेस्ट दिस थ्री इनपुट एंड गेट। थ्री इनपुट एंड गेट को मुझे टेस्ट करना है। जस्ट आई विल राइट क्लिक ऑन दिस अगेन। इसके ऊपर मैं राइट क्लिक फिर से करता हूं। आई विल यूज द न्यू सोर्स। न्यू सोर्स यूज करने के बाद मुझे यूज करना पड़ेगा VHDL टेस्ट बैच यहां पे। Is it right? I will click on the VHDL test bench. I will give some name. I will give the name as test underscore and gate and underscore 3 underscore in. ये and underscore 3 underscore in देने की जरूरत भी नहीं है। अगर test 1, test 2, test 3 भी ऐसे भी नाम दे सकते हो आप। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे मेरे पास दो मॉड्यूल है टेस्ट करने के लिए, नॉट गेट एंड 3 इनपुट एंड गेट। नॉट गेट तो ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया है, इसलिए मैं इसका कर्सर इसके ऊपर क्लिक करता हूं। अगर इसके ऊपर कर्सर रहेगा, आप नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करेंगे तो फिर से नॉट गेट का टेस्टिंग हो जाएगी। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड 3 इनपुट, देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट एंड फिनिश। नाउ द सिस्टम विल क्रिएट अनदर टेस्ट फाइल। लुक एट हियर, ये सिस्टम में एक टेस्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा। इफ आई एम एबल टू शो करेक्टली हियर, लुक एट दिस पार्ट, यहाँ पे एक टेस्ट फाइल क्रिएट हुआ है। लुक एट दिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपांड करता हूं तो ये मेरा 3 इनपुट एंड गेट का सिस्टम है, ये यहाँ पे उसका कोड है। अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूं, यहाँ पे ये 3 इनपुट एंड गेट का ये टेस्ट फाइल क्रिएट हुआ है। टेस्ट फाइल में पहले मैं कमेंट डिलीट करता हूं इसके। फर्स्ट आई विल डिलीट द कमेंट।
क्योंकि कमेंट यहाँ पे रहेंगे तो ये लगेगा कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, डिफिकल्ट लगेगा, इसलिए मैं जस्ट यहाँ पे कमेंट्स डिलीट कर रहा हूँ। जो मुझे थोड़ा सा ग्रीनिश शेड में दिख रहा है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे आई एम डिलीटिंग द कमेंट्स। नाउ लुक एट व्हाटएवर द सिस्टम आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट, इसको सेव करता हूँ मैं। ये सिस्टम जो मैं इंप्लीमेंट करने का ट्राई कर रहा हूँ, लुक एट यहाँ पे भी एरर में दिखाएगा आपको, यहाँ पे आपके पास इतने एरर्स हैं। ये एरर्स क्यों है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेस्ट the sequence combinational circuit and the waveform which we are using that is compatible to the sequential circuit। मिस मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे डिलीट करने पड़ेंगे क्लॉक स्टेटमेंट्स। 3 क्लॉक स्टेटमेंट्स होते हैं बाय डिफॉल्ट। जो प्रोग्राम क्रिएट होता है उसमें 3 क्लॉक स्टेटमेंट होते हैं। कहां कहां पे? मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। एक क्लॉक स्टेटमेंट यहां पे होता है। आई विल डिलीट दिस फर्स्ट, क्योंकि हमारा एंड गेट ये सीक्वेंशियल सर्किट नहीं है, ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। इसका क्लॉक स्टेटमेंट को मैं डिलीट करता हूं। आई हैव डिलीटेड दैट। देन आई विल डिलीट दिस क्लॉक प्रोसेस आल्सो। इस क्लॉक प्रोसेस को मैं डिलीट करता हूं। इज इट राइट? और उसके बाद मैं और एक क्लॉक स्टेटमेंट यहां पे है, वेट फॉर क्लॉक पीरियड, इसको भी मैं डिलीट करता हूं। आई हैव डिलीटेड द क्लॉक स्टेटमेंट्स। अब सेव, मैं इसको सेव करता हूं। फिर उसके बाद यहां पे इंसर्ट स्टिमुलस हियर, मैं यहां पे आता हूं और मैं यहां पे स्टिमुलस देता हूं। हाउ मेनी पॉसिबल इनपुट्स वी हैव? हमारे कितने इनपुट्स हैं? हमारे इनपुट्स है I1, I2, I3, सॉरी I2, I3, I4, 3, राइट। तो हमारे कॉम्बिनेशन इनपुट्स क्या क्या होंगे? 0 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। यस, someone has difficulty? No, I guess. हाँ, I will write input I1, मैं input assign कर रहा हूं। This I1 is assigned as single quote 0. Is it right? 0 semicolon. Look at here. ये मेरा I1 है. Look at this. This is my I1. This is my sorry I2. This is my I3 and this is my I4. Sorry. In place of this I1, I have to make it as I2 because no I1 is there for this AND gate. AND gate में I1 नहीं है. ठीक है? ये I2 को मैंने 0 अप्लाई किया. I3 को मैं कुछ और अप्लाई करूंगा या तो 0 अप्लाई करूंगा. Now this I2 is assigned as again 0. ये टेस्ट फाइल से हम इनपुट्स दे रहे हैं, nothing else. फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सॉरी I3 मुझे करना पड़ेगा इसको. This is my I3. Is it right? This is my I3 and finally I will make it as I4. This is I4 then colon then 0. Is it right? यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा wait statement. Is it right? Wait for, you can do some time. Wait for 10 nanosecond या 100 nanosecond, choice is your 100 nanosecond and here is the semicolon. मैंने इससे क्या किया? This is I2, I3, I4. This is I2, I3, I4. These are my inputs. अब just इसको मैं zoom out करता हूं, आपको दिखाता हूं. यहाँ पे I2, I3 and I4. These are the 3 inputs of our AND gate and this is O2 is the output. मैं इसी को assign कर रहा हूं यहाँ पे. I will zoom it again. Look at this part. यहाँ पे मैंने सिर्फ 0 0 0 इनपुट अप्लाई किया। मींस ये 0 है, ये 0 है, ये भी तीनों 0 है। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दिस। इसको मैं चेंज करूंगा जरा। आई विल कॉपी दिस एंड जस्ट आई विल पेस्ट हियर। कितनी बार मुझे पेस्ट करना पड़ेगा? मुझे पेस्ट करना 8 टाइम्स। इज इट राइट? बिकॉज 0 0 1 0 1 0 0, यस यस, 7 8 ज्यादा भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई विल कॉपी दिस अगेन। मैं इसको पूरा कॉपी करता हूं इस पूरे सिस्टम को और मैं इसको अभी 6 बार पेस्ट करता हूं। दिस इज सेकेंड, दिस थर्ड, फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स, दिस इज 7, दिस इज 8। एक बार एक्स्ट्रा मैं करूंगा इसको एंड देन आई विल करेक्ट इट। इज इट राइट? इंसर्ट स्टिमुलस हियर 0 0 अप्लाई किया, यहाँ पे मैं इसको करता हूं 0 0 1। देन इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको हम रखते हैं 0 1 0। दिस इज 0 0 1 हो गया। अभी इसको मैं 1 करता हूं 0 1 0, ये हो गया 2 3। कैसे करेंगे? 0 1 1। इज इट राइट? फिर इसको मैं 1 करता हूं, इसको भी मैं 1 करता हूं। आई विल मेक इट एज 1। इज इट राइट? 1 1 हो गया। फिर हमें करना पड़ेगा 4 4 मींस 1 0 0। आई विल मेक इट एज 1 1 0 0। उसके बाद हमें इनपुट क्या देना पड़ेगा? 5 1 0 1। इज इट राइट? तो ये हो गया 1
दिस इज 1 0 एंड इसको मैं फिर से 1 करता हूं 5 इज राइट। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा 6 ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आई एम ट्राइंग टू चेक। दिस इज 6 6 कैसे होगा 1 1 0 होगा 6 देन उसके बाद मैं इसको इनपुट दूंगा 7 7 that is 111 is this is 1 look at this is 1 this I3 is also 1 and this I4 is also 1 1 1 1 and lastly सबसे लास्ट में मैं इसको फिर से 0 0 रखता हूं यानी कि मेरा फिर लास्ट में आउटपुट मेरा क्या होगा 0 0 होगा। मैं इसको इस बीच वाला जो पोर्शन है उसको मैं डिलीट कर रहा हूं आई एम डिलीटिंग जस्ट एंड दिस इज माय कंप्लीट VHDL test bench stimulus. I have applied the stimulus. Look at here. How is the stimulus? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. This is 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and this is 1 1 1 and so on. This I will zoom out. इसको मैं zoom out करता हूँ. Look at here. Just insert stimulus here. यहाँ पे मैंने stimulus apply किया है. I will save the reason. मैं इसको save करता हूँ. लेकिन जब भी आप इसको टेस्ट करते हो आपका कर्सर यहाँ पे नहीं चाहिए, आपका कर्सर चाहिए टेस्ट फाइल पे। टेस्ट अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर 3 इन ये मेरे फाइल का नाम है, टेस्ट फाइल का नाम है। मैं उसको टेस्ट फाइल को क्लिक कर रहा हूं एंड जस्ट आई एम यूजिंग दिस ऑप्शन सिमुलेट बिहेवियरल मॉडल। डबल क्लिक ऑन दिस, इट विल एबल टू सिमुलेट द बिहेवियरल मॉडल। जस्ट आई एम simulating it. Yeah, I've simulated it. Now these are the waveforms. We are not able to justify the waveforms. We have to bring it into the proper format क्योंकि यहाँ पे टाइम जो एक्सिस है ये बहुत बड़ा टाइम एक्सिस होता है, इसको हम मिनिमाइज करते हैं। फर्स्ट तो हमें इनिशियल पोर्शन पे फोकस करना पड़ेगा। अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ, लुक एट दिस वेवफॉर्म्स, यहाँ पे हमें वेवफॉर्म्स मिलेंगे। थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज करता हूँ मैं, तो आपको ध्यान में आना शुरू होगा कैसे हमारा वेवफॉर्म्स है। यहाँ पे लुक एट हियर, आई विल जूम इट आउट। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं ना। लुक एट दिस पोर्शन, इस पोर्शन पे क्या है, इनपुट्स को देखो। यहाँ पे ये I1 I2 I3 ये तीन सभी जीरो है, आउटपुट क्या होगा जीरो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द यहाँ पे नॉट गेट। यहाँ पे क्या होगा 0 0 1 0 0 1 पे भी आउटपुट क्या होगा जीरो। इस क्लॉक साइकिल में 0 1 0 पे भी जीरो, उसके बाद 0 1 1 पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। यहाँ पे क्या है दिस इज 1 0 0 पे। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूं इसको तो 1 0 1 यानी कि 5 पे। इफ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट, मैं यहाँ पे आता हूं फिर से। इफ आई एम कमिंग हियर 1 1 0, वहां पे भी जीरो आ रहा है। एंड फाइनली इफ आई एम कमिंग बैक टू दिस पार्ट, अगर मैं इस पार्ट को आता हूं, लुक एट हियर एट दिस पार्ट, इस पार्ट को अगर मैं क्लिक करता हूं, लुक एट हियर जस्ट अगेन आई विल जूम इट, तो यहाँ पे 1 1 1 पे हमारा आउटपुट भी 1 आ रहा है। जहां पे कर्सर आपका रहेगा ये वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखाता है। मींस व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1 माय आउटपुट इज 1, दैट इज नथिंग बट माय गेट इज द एंड गेट। मेरा गेट एंड गेट है, यहाँ पे आपको उसका वेवफॉर्म दिखाई देगा। मिस यहां से हम ऐसे वेवफॉर्म दिखा के हम इसको टेस्ट कर सकते हैं अवर सर्किट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। मिस वी डोंट हैव एनी सिंटैक्स एरर एज वेल एज लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर आपको प्रोग्राम से पता चलेंगे, हम सिंथेसाइज जब करेंगे, और लॉजिकल एरर आपको पता चलेंगे जब हम इसको सिमुलेट करेंगे। मैं अभी इस वेवफॉर्म विंडो को मैं क्लोज करता हूं, आई एम क्लोजिंग दिस, राइट, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट दिस। हम इसको इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको सिमुलेट किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने इसको किया। नाउ वी विल ट्राई टू simulate and implement this gate, and this is 4 input OR gate। तो अगर मैं यहां पे आता हूं 4 input and OR gate, how this 4 input OR gate will be, ये कैसे रहेगा, it will be something like this। 4 input OR gate, हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। First we are implementing this and this approach is known as a bottom up approach। हम बिल्कुल बॉटम से शुरुआत कर रहे हैं, आगे आगे हम जा रहे हैं and we will implement it। यहाँ पे I4 तक लिया है मैंने, this will be my I5, this will be my I6, this will be my I7 and this will be my I8। These are the inputs and this is my O3। Is it right? पहले हम इसको क्रिएट करते हैं, इसका एंटिटी लिखते हैं, then we will come back। I'm coming back to this module। फिर से यहाँ पे सिमुलेशन, मैं अभी सिमुलेशन में था, I was in the simulation, I will come to the implementation। मैं यहाँ पे आता हूँ,
फिर से मुझे इसके ऊपर कर्सर रखना है, ये डिवाइस होता है, इसके ऊपर कर्सर रखना है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूं, फिर से न्यू सोर्स, क्योंकि अभी मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं और गेट। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा VHDL मॉड्यूल पे, मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे नाम देता हूं और अंडरस्कोर गेट, अदरवाइज और अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर इन, यानी कि 4 इनपुट और गेट, और अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर इन, यू कैन गिव एनी नेम। देन आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। मुझे इनपुट्स के नाम देने पड़ेंगे, मुझे इनपुट्स के नाम देने पड़ेंगे। नाउ लुक एट हियर, जस्ट आई विल जूम आउट, इसको जूम आउट करता हूं मैं। यहाँ पे हमने नाम क्या दिया था सिस्टम को, यहाँ पे हमने i5 i6 i7 i8 दिया था, यही नाम मुझे देने हैं। जस्ट आई विल जूम इट अगेन, मैं इसको फिर से जूम करता हूं एंड आई विल गिव द नेम। हमने i5 से देना, i4 तक दिया था शायद, i1 i2 i3 i4, आई विल राइट इट एज i5 i6 i7 i8, ये मेरे इनपुट्स हो गए। और मेरा जो आउटपुट है उसका नाम है O3। इसको मैं करूंगा आउट, या तो पहले इन्हीं रखता हूं, गलती से वहां पे करेक्ट करूंगा मैं, क्योंकि वहां पे भी कैसे करेक्ट करते हैं आपको ध्यान में आना चाहिए। ये चाहिए एक्चुअली आउटपुट, लेकिन मैं इसको इनपुट ये रखता हूं और वहां पे मैं करेक्ट करूंगा, तो आपको ध्यान में आएगा कि करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, करेक्शन और जगह पे भी पॉसिबल है। आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट, आई विल क्लिक ऑन फिनिश। मैं इसको जूम आउट करता हूं फिर से। तो यहाँ पे जो कमेंट्स है, इस कमेंट्स को मैं डिलीट कर रहा हूं, आई एम डिलीटिंग दिस कमेंट्स। इस कमेंट्स को मैंने डिलीट किया। यहाँ पे जो कमेंट्स है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूं, यहाँ पे ये भी कमेंट मैं डिलीट कर रहा हूं यहाँ पे। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे भी इन रह गए, यहाँ पे भी इन रह गए, लेकिन मेरा O3 क्या है, आउट है। मैं इसको यहां से भी मॉडिफाई कर सकता हूं, ऐसा जरूरत नहीं कि वहां पे ही मॉडिफाई करना आपको, यहाँ पे मैंने मॉडिफाई किया। दिस इज एंड आई एम सेविंग द डिजाइन, सेव, मैंने इसको सेव किया। अभी मुझे इसको गेट लिख, इसको प्रोग्राम लिखना है। तो हाउ विल बी माय प्रोग्राम, 4 इनपुट और गेट है, आई विल राइट डायरेक्टली, अदरवाइज आई विल जूम इट आउट। इसको जूम आउट करता हूं मैं, इसको, इसका इक्वेशन बुलियन एक्सप्रेशन कैसे होगा उसको मैं यहाँ पे लिखता हूं। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा दिस O3 इज इक्वल टू, या इज असाइंड एज, कैसे होगा, मैं इन दोनों का और करता हूं, इन दोनों का और करता हूं, फाइनली इन दोनों का और करता हूं। इस ईयर ब्रैकेट में i5 और i6, फिर से और एक ब्रैकेट में i7 और i8, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। ये दोनों का और हो जाएगा, ये दोनों का और हो जाएगा, फाइनली इन सब का और हो जाएगा। दिस इज द और गेट, समथिंग लाइक दिस, इज इट राइट? Now I will write the same thing, इसी सब सेम थिंग को मैं यहाँ पे लिखूंगा। I will zoom in again, मैं zoom in करता हूं यहाँ पे, I will write the code. This is O3 is assigned as, how is the O3? O3 is assigned as, bracket start, I'm writing this is i5 or, look at this part, this is i5 or i6, this is i6, bracket close, फिर से और, फिर से bracket start, i7 and i8, i7 और i8, ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। दिस इज माय कंप्लीट कोड, इज इट राइट? दिस इज डेटा फ्लो मॉडलिंग। सिंपल गेट के लिए जनरली डेटा फ्लो लिख से आप बिहेवियरल भी लिख सकते हैं। इफ दिस i1 is that and so on, you can prepare the truth table and you can prepare its behavioral code also. Just I'm using the data flow code. Is it right? Now यहाँ पे हमने एंड को इंप्लीमेंट किया और को हम अभी कर रहे हैं। तो और को मैं टॉप मॉड्यूल बनाता हूं यहाँ पे, आई विल क्रिएट इट एज अ सेट एज टॉप मॉड्यूल। जस्ट यस, आई एम क्रिएटिंग इट एज अ टॉप मॉड्यूल। उसके बाद मैं इसको सिंथेसाइज करता हूं, इस और गेट को सिंथेसाइज करता हूं। आई एम कमिंग हियर एंड आई एम डबल क्लिकिंग ऑन इट, आई एम सिंथेसाइजिंग इट। मैं इसको जूम आउट करता हूं, आई एम सिंथेसाइजिंग इट नाउ। It will take little time. Yes. Look at here. यहाँ पे मैंने इसको सिंथेसाइज किया, ये सिंथेसाइज हुआ है, देयर इज नो लॉजिक सिंटैक्स एरर। ठीक है, फिर उसके बाद हमें इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा लॉजिकली, या तो हम इसका RTL schematic देख सकते हैं। इफ आई एम राइट क्लिकिंग ऑन दिस, आई विल क्लिक ऑन ओके, आई एम एबल टू सी दिस, लुक एट दिस पार्ट। या तो इसको जूम आउट करता हूं मैं, यहाँ पे जूम आउट, ये मेरा और गेट है, इसको डबल क्लिक करता हूं तो ये एक इनपुट, दूसरा इनपुट, तीसरा इनपुट, ये चौथा इनपुट एंड दिस इज और गेट।
This is my internal architecture. I will close this. This is Rtl schematic. I will close this and then I will come to the next part. वही रिपीट होता है बार बार. फिर मैं इंप्लीमेंटेशन की जगह आता हूं सिमुलेशन को. इज इट राइट? सिमुलेशन पे मुझे, मैं इसको मिनिमाइज करता हूं फिर से. नाउ लुक एट हियर. हमने 3 इनपुट एंड गेट टेस्ट किया, नॉट गेट टेस्ट किया, अभी हमें और गेट टेस्ट करना है. I will right click on this. I will use the new source. I will use the VHDL test batch. मैं यहाँ पे टेस्ट फाइल को नाम देता हूँ test underscore or underscore 4 underscore n. Test or gate which is having the 4 input. That I mean to say. Then click on the next. Now look at, जितने भी हम मॉड्यूल बनाते जाएंगे सभी मॉड्यूल यहाँ पे देखते जाएंगे. लेकिन मुझे नॉट को टेस्ट नहीं करना है, मुझे एंड को भी टेस्ट नहीं करना है, मुझे और को टेस्ट करना है. आई विल पुट द कर्सर ऑन द और, आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट, आई विल क्लिक ऑन फिनिश. जस्ट राइट. ऑटोमेटिकली टेस्ट फाइल क्रिएट हो जाएगा. लुक एट हियर, यहाँ पे देखो ये टेस्ट फाइल क्रिएट हुआ हमारा टेस्ट और 4 इन. अगर मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूं, वी आर एबल टू सी दिस. दिस इज माय मॉड्यूल एंड दिस इज माय टेस्ट फाइल. ये टेस्ट फाइल है. मैं जूम आउट करता हूं फिर से. आई विल जूम आउट and I will click on this test file. This is my test file and I'm deleting the comments. मैं comments को delete कर रहा हूं. I'm deleting the comments. फिर इसके बाद हमें इसको stimulus देना है. Is it right? Stimulus देना है. उससे पहले हमें clock statements delete करने पड़ेंगे. Because ours is the combinational circuit. Look at 3 clock statements आपको delete करना है. This is the first clock statement I am deleting. Then this is the clock process which I am deleting. इसको मैं delete कर रहा हूं. And finally I am deleting another statement, clock statement here. ये 3 clock statements आपको delete करने हैं. Because this software is directly compatible to the sequential circuit. और combinational circuit के लिए हम इसको use करना चाहते हैं तो थोड़ा सा modification हमें करना पड़ेगा. And here I am trying to insert the stimulus here. Insert stimulus here. तो हमारे कितने इनपुट्स हैं? हमारे 4 इनपुट्स हैं. Inputs are I5 is assigned as, I will insert it as 0, sorry, single quote, it should be 0, ye 0, then semicolon. Our second input is I6. I6 is assigned as, here, single quote, 0, then I7. I7 is assigned as, again, 0, and then I8. This I8 is assigned as again 0. ये stimulus हम यहाँ पे दे रहे हैं. And wait for, I have to use the wait statement. Wait for 100 nanosecond. Using, and I will copy this statement and I will paste this statement. How many times? इस statement को मैं copy और paste करूँगा कितने बार? 16 times. Is it right? Because I want to apply input 0, 0, 0, then 0, 0, 0, 1, and so on. This is second, 2, 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, this is 12, this is 13, this is 14, this is 15, this is 16, and this is 17. I will add one time extra, otherwise I will delete later on. And this is not the only one way to give the stimulus. This is the simplest way I am discussing. I will discuss little more logical ways also to insert the stimulus. We can use the 2 clock statements or 2 waveforms, and then we can use in that sense also. This is the simplest way. तो पहला इनपुट हमारा था 0, 0, 0. फिर नेक्स्ट इनपुट जो होगा इसका ये होगा 0, 0, 1. फिर ये होगा 0, 0, 1, 0. मैं यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ. ये 0, 0, दिस इज 1, 0. उसके बाद 1, 1 होगा. दिस इज 1 एंड हियर इज आल्सो 1. देन 1, 1 के बाद नेक्स्ट जो स्टिमुलस होगा दिस 3 हो गया, 4 होगा. दिस इज 4. दिस इज 4. द नेक्स्ट स्टिमुलस शुड बी 5. 5 मीन्स दिस इज 1, 0, 1 is the 5.
फिर मुझे इनपुट देना है 6. Is it right? 6. How it will be? 1 1 0. This is 1, this is 1 and 0. उसके बाद 6 हो गया, मुझे देना इनपुट 7. 7 means all 1. This is 1, this is 1 and this is 1. फिर उसके बाद मुझे इनपुट देना है 8. मुझे इनपुट देना है 8 means 1 0 0. मुझे इनपुट देना है 9. 9. How it will be 9? This is 1 0 0 1 is a 9. Is it right? उसके बाद मेरा स्टिमुलस रहेगा 10. That is 1 0 1 0 is a 10. 11. Look at here. 11 is, this is 1 0. This is 1 1. 1 0 1 1 is 11. Then I used to input as a 12. 12 देना है मुझे. 12 means 1 1. This is 1 and this is also 1. 12. 13. How will be my 13? हमारा 13 कैसे होगा? This will be 1. This is 1 0 1. This is 13. Is it right? 1 0 1. This is 1 0 0 4. 13. Then 15. This is 13. Then 14. 14 will be 1 1. This is 1 0. This is 1 0 1 5. This is 1 1 0 6. That is 14. And finally, I want input as a 1 1 1. This is 1. This is 1. This is 1. And this is 1. And finally, I will put it as 0 0 0. या तो आप 1 1 पे भी end कर सकते हैं. And just I will delete some lines here. मैं यहाँ पे कुछ lines को delete कर रहा हूँ. Just and I am saving this design. I am saving this design. I will zoom it out. मैं इसको zoom out करता हूँ. Now look at here. We have applied the stimulus here, and this is not the only one way to apply the stimulus. There are number of ways are there. सबसे सिंपल तरीका मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि सबसे सिंपल है, जिसको दिमाग लगाना नहीं है. If you want to use another technique, then you can use the waveform kind of the approach also. Here, insert stimulus here. We have applied 0, 1, 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8. This is 9, 10, 11, 12, 13, then 14, 15. This is 15, and this is again 0, 0, 0, 1. I have saved the design. हमने इसको save किया. Now put on the cursor on this test bench file and just click on, or double click on simulate behavioral model. Just I'm double clicking on it. And we are able to simulate the behavioral model. I will minimize it, and then I am in a better position to show you your inputs and outputs. Now look at this part. Look at this portion. 0 0 के लिए 0 0 है. यहाँ पे भी look at this 0 0 1. O3 is 1. और गेट है. एक भी इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 रहेगा. ये 1 है. यहाँ पे भी फिर आउटपुट 1 है. यहाँ पे भी आउटपुट 1 है. यहाँ पे भी आउटपुट 1 है. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. And finally, when all inputs are, in this particular case, when all again one input is there, that is 0 0 1. That's why I5 is 1 finally. That's why again its output is 1. Means if any one of the input is 1, then output is 1. Means this is the implementation of the OR gate. आप यहाँ पे stimulus change करके फिर से इसको भी देख सकते हैं. Is it right? फिर से आप देख सकते हैं. Last में हमने क्या किया है? This is I5 is 0, but at last it has become 1. And then again it is stimulating again and again. Otherwise you can change your system inputs, and finally you can make it as your system. Is it right? Now फिर से मैं implementation को आता हूं. Now ये सभी modules को हमें इकट्ठा करना है. That's why we need to write this code. इस कोड को हमें अब लिखना पड़ेगा. ये वाला कोड.
क्योंकि अभी हमने इसको इंडिपेंडेंटली डिजाइन किया है. Now, using this top module, entity 4 mux, 4 input mux, A, B, C, D, S, select line, these are the inputs. I will complete this code and our system will be the single system that I will discuss in the next lecture.